Okay, a very good evening to one and all, and those who are attending this live session. My name is Prashant, and from Ekoching. So today in this particular video, we'll talk about how to identify the main idea. Now, first of all, even before talking about even before talking about why main idea, a very important thing which I want to discuss with you exactly that why we are talking about this particular video, right? So when we talk about main idea, this is a cause of worry for many students, and this is very important for students as far as verbal ability and reading comprehension is concerned. Now, when we talk about main idea, why it is important, so the first thing is ये important क्यों है इतना, क्यों हम लोग मेन आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं. So the first thing which I want to say is comprehension, right? So the first and very important thing, even when we talk about comprehension, राइट सो हम लोगों ने काफी बार देखा है ये चीज, और हम लोग काफी बार ये चीज समझ चुके हैं. वी नो ऑल दिस थिंग्स दैट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज when it, I mean, reading comprehension when it comes to management examination like CAT, Z or others exam, because approx if I talk about CAT or Z for that matter, 70 to 80% of the paper is your reading comprehension. If I talk about other management exams as well, with symbiosis as an exception, we are talking about roughly between 30% to 60% of your verbal ability and reading comprehension section comprises of comprehension, right? So why main idea? So this is the reason why we are talking about the main idea, because we are talking about 70% of my paper is reading comprehension. Now, very importantly, if the paper is reading comprehension, and these exams, they are typically focused on majorly on idea-based questions, right? So you will rarely find fact-based questions nowadays, because they basically test you on idea-based questions, how good or how bad you are in comprehending those questions, right? So why main idea? Point number one is to comprehend the passages. आपको पैसेज कितना अच्छी तरीके से समझ में आया है, how good or bad you are in comprehending the passages. That's why main idea, understanding the main idea is very important, and that's why this video, right? Not only passage, even to identify the questions as well. If you want to identify the questions, what exactly they are asking, and when we are talking about they talk about a logical completion, they talk about finding a flaw in the passage, or they're talking about finding an underlying assumption, they're talking about inference. All these questions, because they test you on that, have you understood the main idea or not? To avoid regression, a very important thing, right? So if let's say you got the main idea of the passage, you can avoid going back to the passage again and again, right? That's a very important thing. अगर आपको पैसेज समझ में आ गया है, अगर आपको मेन आइडिया समझ में आ गया है, तो आप शायद पैसेज पे बारी बारी नहीं जाएंगे, right? Eliminating the options, right? Very important thing, because अगर आपको मेन आइडिया समझ में आ गया है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे. whether if you talk about the main idea, आपको समझ में आ गया है कि पैसेज क्या बोलना चाह रहा है, आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे, whether that particular option is out of the scope of the given passage. क्या वो पैसेज के स्कोप में है भी सही या नहीं है, या फिर वो किस हद तक और ये टॉपिक जो है वो कवर कर रहा है. So all these things you can cover, or you can ensure that it will help you in eliminating the options. Solving the questions, tone-based questions, we have seen predominantly in exams like Narsimunji, right? The attitude or the tone of the author, right? Whether it is a positive tone or a negative tone or a neutral tone. Again, these are all the things which you will be able to comprehend well when you know the main idea. So in short, all the questions in your verbal ability and reading comprehension, I'm not talking about grammar and vocabulary, obviously, you can solve by the help of main idea. So आपको इसीलिए main idea समझना बहुत जरूरी है, और ओवरऑल आप अगर मेन आइडिया समझ गए तो मेरे ख्याल से आपको आरसी के अंदर कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है, राइट? लेट्स मूव फर्दर, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. सो थिंग्स टू लुक आउट फॉर, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेन आइडिया. सो द फर्स्ट थिंग इज टाइटल, राइट? हम लोग बात कर रहे हैं टाइटल. अब मैं आपको ये चार चीजें ये बता रहा हूं कि आपको मेन आइडिया आइडेंटिफाई कैसे करना है, बिकॉज जनरली व्हाट स्टूडेंट आस्क्ड, आपने तो बोल दिया आइडेंटिफाई करो, कहां, whether कहां find out करो, where is the main idea, tell me how should I comprehend the main idea. So the first thing which I'm talking about is title. It helps to set the context of the main idea.
or I have written is subject. So the first and very important point here is आप टाइटल को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए, कॉम्प्रिहेंड करने की कोशिश करिए, बिकॉज टाइटल एटलीस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट. सो आपके मेन आइडिया के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे, एटलीस्ट मेरा सब्जेक्ट जो है दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्लियर, मेरा वो मिस नहीं होना चाहिए. सो आपका कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट अ टाइटल. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. टाइटल पे देखिए. बट पॉइंट इज, सर कैसी बातें कर रहे हो आप, यहाँ तो टाइटल मुझे मिलेगा नहीं, राइट? अगर हम कैट की बात कर रहे हैं, जेड की बात कर रहे हैं, मुझे टाइटल नहीं मिलेगा. आई नो नहीं मिलेगा. होल्ड ऑन. आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ. आप देखेंगे फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टोन, राइट? टोन का मतलब ये जो पेपर से, ये जो ऑथर है जिसने हमारी इतनी जिंदगी खराब कर दी है बाय आस्किंग दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, बाय आस्किंग दीज डिफिकल्ट पैसेजेस, राइट? सो दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर, right? Which part of subject author is interested in? So the first thing is that you will be able to understand the tone. ठीक है, आपको टोन समझ में आएगा, whether the attitude of the author is positive, negative, वो क्या टोन सेट करना चाह रहा है, और ऑथर जो है इस पूरे सब्जेक्ट के कौन से एरिया में इंटरेस्टेड है. सो ओवरऑल ऑथर अगर आप देखोगे पूरे सेट करेगा, उस सब्जेक्ट का कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा, बट कहीं ना कहीं आप देखोगे there is particular thing author interest होगा, that the particular part of the subject जो author will be interested in, it will be help you, the first paragraph will help you to know that as well, right? आपको यहाँ मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ. कीवर्ड्स देखिए, अगर ऑथर पॉजिटिव बोल रहा है, सर्च फॉर दोस पॉजिटिव वर्ड्स. अगर ऑथर नेगेटिव बोल रहा है, सर्च फॉर दैट नेगेटिव वर्ड्स. ये चीज आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी. और लास्ट पैराग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल हेल्प यू टू to understand the conclusion. Where is the author concluding now, right? और जरूरी नहीं है कंक्लूजन लास्ट के अंदर भी हो, कंक्लूजन शुरू के अंदर भी होता है, राइट? सो टाइटल, वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पैराग्राफ. टाइटल और सेटिंग द कॉन्टेक्स्ट, द सब्जेक्ट. फर्स्ट पैराग्राफ talking about a specific area of the subject author is interested in. Keywords, what are those keywords? And the last is last paragraph, because it will help you to identify the conclusion. These four things will help you to understand the main idea, और ये आपको बताएगा आखिरकार ये main idea है क्या, right? Let's move further. देखते हैं. So what I have done is मैंने एक आर्टिकल लिखा है, right? मैंने आर्टिकल लिया है. This article is taken from the Hindu newspaper, right? From today only, right? और इसके अंदर what I have tried here is कि मैं आपको शायद एक्सप्लेन कर पाऊं that how you should identify the main idea, किस तरीके से करना है और क्या करना है. Now the first thing which I want to say here is, let's start. हम यही चार चीजें, subject line, first paragraph, last paragraph, and keywords, right? So the first thing which I have written here is the future of, or the title is the future of Indian secularism, right? So ये मेरे को दो और तीन चीज इंपॉर्टेंट बता रहा है. क्या? First of all, we are talking about Indian secularism, right? इंडियन सेक्युलरिज्म के बारे में बात कर रहा है और उसके फ्यूचर के ऊपर बात करेंगे. तो कॉन्टेक्स्ट जो मैं आपको बोल रहा था, सब्जेक्ट लाइन इज वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्युलरिज्म, वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया के अंदर सेक्युलरिज्म, और उसके अंदर भी हम लोग उसके पास्ट प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं. वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट, और ऑथर इज मोर कंसर्न्ड अबाउट फ्यूचर. Let's go to the second line. It is premature to pronounce the end of constitutional secularism. It is very premature, right? कि end नहीं हुआ है, but it has only suffered a setback. There's something wrong. Author is not happy with. देखिए मैंने ग्रीन कलर के अंदर लिखा है the author is not happy with. आपको ये क्लूज लेने पड़ेंगे, राइट? मैंने लिखा है it is premature, बहुत जल्दी है अनाउंस करना that it is the end of the constitutional secularism, because secularism, the ray of hope is there, राइट? ये चीजें मैं क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज ये सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आनी चाहिए जब आप कैट का पैसेज क्रैक कर रहे हैं. और अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू थिंग्स विल बी वेरी वेरी इजी, राइट? आगे जाएंगे थोड़ा सा हम लोग. फर्स्ट पैराग्राफ देखिए, ऑल दीज ब्लू वंस, ये जो मैंने मार्क किए हैं, ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर कीवर्ड्स, राइट? लेट्स सी एक इंपॉर्टेंट चीज उसने क्या लिखा है यहाँ पर. मैंने this guy Rajiv Bhargav is optimistic that constitutional secularism can be revived and brought back as a backbone of Indian democracy. So अब इसके अंदर assumption, आपसे assumption questions पूछे जा सकते हैं. assumption इसका पहला हो सकता है it is possible, ऐसा मतलब first of all it is a very important, secularism is very important part of Indian democracy.
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों? तभी तो वो बात कर रहा है। अगर इंपॉर्टेंट चीज होती नहीं तो बात करता क्यों? देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू ब्रिंग इट बैक, राइट? अगर वो पॉसिबिलिटी है तभी वो बात कर रहा है, तभी वो ऑप्टिमिस्ट है इस चीज के लिए दैट यस वी शुड डू दिस। सो ये सारे आपके यहां से assumption बेस्ड क्वेश्चंस अराइज होते हैं, ठीक है? देन दे आर टॉकिंग अबाउट, अब मैंने कीवर्ड बोला था, मैंने क्या बोला? ऑथर इज नॉट हैप्पी, ऑथर इज नॉट हैप्पी। नेगेटिव वर्ड सर्च करूंगा, लेमेंट। our public discourse is resounding with triumphalism, victory on one hand and lament on the other. Lament का मतलब होता है sorrowful, right? बहुत ही दुखी है, they are basically showing grief, right? Lament. उसके बाद हम लोग बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? It's like भूमि पूजन has burned its bodily remains. Negative. He want to join. वो क्या बोला उसने यहाँ पर, अगर आप देखोगे, one part of mine wishes to join the lament. ठीक है? Heavy price, we have paid heavy price for the heavy price in our country for, you are talking about the secularism. ठीक है? It is misused and abused. We are talking about party political secularism. यहाँ से मुझे समझ में आएगा, now he want to talk something on politics. Now he want to do something on politics. Again, let's go to these lines. Unlike some secularism, he's comparing it with other secularism as well. Discrimination on grounds of religion, again negative, right? Then यहाँ पर वो ठीक है, they're talking about constitutionally कब engage हो रहा है, कब नहीं होना है, इसको आप चाहो तो मिस कर सकते हो। मैंने इंपॉर्टेंट चीज लिखी है जो आपको यहाँ पर कीवर्ड्स, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर ये सारे कीवर्ड्स हैं, इस पूरे एडिटोरियल के अंदर ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, राइट? सो ये सारे कीवर्ड्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, दैट पूरा एग्जाम्पल आपको कैट पैसेज के अंदर पूरा एग्जाम्पल अगर कहीं पर आ जाए, छोड़ देना। अगर आप ये इतना जो मैंने क्रॉस पे किया हुआ है, अगर आप ये नहीं भी पढ़ोगे, स्टिल आई एम टेलिंग यू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अगर आप ये ब्लू वाले वर्ड्स, मैंने ब्लू वाले अलग में क्यों रखे हुए हैं? दिस ब्लू वाले वर्ड्स इज गिविंग मी द आइडिया दैट इंडियन सेक्युलरिज्म हैज सेट देयर इज अ सर्टेन सेटबैक, और उसको रिवाइव किया जा सकता है। और वो सेटबैक क्या है वो यहां पर दिया हुआ है। सेटबैक अगर मेरे को देखना है, मुझे अगर ये दो चीजें करनी थी, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या था? ये फर्स्ट पैराग्राफ जो मैंने ब्लू वंस, ऑल द ब्लू वंस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था करना। दूसरी चीज मेरे लिए और इंपॉर्टेंट चीज क्या था? ये जो रेड वंस मैंने लिखे हुए इनको पढ़ना, दैट्स इट। ये अगर मैंने पढ़ लिया, माय पैसेज हैज बीन टेकन केयर ऑफ। एंड कंक्लूजन के अंदर अगर आप देखोगे, अगेन मैंने थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाने की कोशिश की है, तो अगर आप मेरे मार्कर्स देखोगे, वो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे ज्यादा होंगे और एंडिंग के अंदर सबसे ज्यादा होंगे। बीच वाला आई जस्ट गो थ्रू, और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कीवर्ड्स, फर्स्ट पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, ये चीजें अगर आपको समझ में आ गई, मैं बता रहा हूं थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ। अब मैंने इन्हीं चीजों से अगर आप देखोगे, इन सब चीजों से मैंने क्या क्या चीजें आइडेंटिफाई करी? मैंने assumption आइडेंटिफाई किया, किस एरिया के अंदर बात किया हुआ है, मैंने पॉलिटी आइडेंटिफाई किया, मैंने ये आइडेंटिफाई किया ऑथर हैप्पी नहीं है, मैंने एग्जाम्पल को पढ़ा नहीं है, देयर इज अ रे ऑफ होप, सब्जेक्ट द कॉन्टेक्स्ट इज सेक्युलरिज्म, और उसके फ्यूचर की बात कर रहे हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, ये 5 चीजें इस एडिटोरियल से लेने लायक थी। सारे क्वेश्चंस कैन बी टेकन केयर ऑफ, बिकॉज अब आपको मेन आइडिया समझ में आ गया है, अब आप इससे टैकल कर लोगे व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस। सो जब आप एडिटोरियल पढ़े, और मैं इसलिए स्टूडेंट्स को बोलता हूं, develop a habit of reading these editorials. At least write summary of these particular editorials, write the main idea of these editorials. If you are able to do that, do it for the next 60 days. I am telling you, do it for the next 60 days. And the students who are preparing for CAT 2022, I am telling you, कोई problem नहीं आएगी, but you have to do it this way only. Right? So with this, I'm coming to an end of this particular session. Thank you, and I hope आपको समझ में आएगा कि अब आपको मेन आइडिया किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है as far as as far as these editorials are concerned or the passages are concerned in your CAT examination. That's it from my side, guys. Thank you, and keep watching Ekoching.